Arunachal Pradesh is no stranger to HIV/AIDS. The state has its own share of battle with the disease. According to Arunachal Pradesh State Control Board, the first HIV/AIDS positive case was recorded on 1998. And if we look at the current data provided by the board, we will see that the number of positive cases have been on the rise drastically. Last year in the state, the total number of positive cases was recorded to be 546. And if we look in the current year, in 2023, the number of positive cases have actually doubled, with a total number of cases being 1,122. And the major hotspot area of the positive cases are Itanagar Capital Region with a total of 447 cases, followed by Namsai with 373 positive cases. Arunachal Pradesh State AIDS Control Society was established in 1998, and for the past 25 years, the board has been working hard not only to contain the disease but also to inform and educate people on the virus. Dr. Anum Borang, a senior health officer of the State AIDS Control Society, has worked in this field for over 17 years and is currently posted as the Deputy Director in Arunachal Pradesh State AIDS Control Society. Basic sudden surge and a sudden increase of reactivity is only and only seems from the injecting drug users, not the female sex worker. Of course, there, but not the migrant laborers, not the other, the PTO and all. But you know, this drug addiction is suddenly spread even in the rural areas also. So I don't know young people they are involving in the injecting drug users. So they lost the consciousness कि HIV positive sample में जैसे syringe prepared having the HIV this one positive, they spread to everyone, every peer. I told you, in a group will be infected from the one person who infect like that way. And ultimately, after injecting drug also, they usually do the unsafe sex and all. They lost to forget the condoms and this thing and that thing. These sort of things are the main reason I can say, certain source of this. Usually, it is seen that general population and at the community level is not so much involved in the Namsai data and this Itanagar data also. It seems only in high-risk people who are doing high-risk behavior. We have a IEC component here. We are doing the awareness, how to prevent, how to aware, how to generate knowledge about HIV/AIDS among themselves. Then we have SI division, strategic information. All the data activities will be captured in the SI division and it is shared to the NACO, who is our parent department. Here we are involving 31 targeted intervention projects run by the 31 NGOs. So they are doing the preventive aspect of this, all these high-risk people. I mean injecting drug users, female sex worker, and transgender, migrant laborers, and all this taken care by the TI people, targeted intervention project people. The society organizes several integrated health camps on a regular basis and goes to different locations, mostly targeting people who are most prone to the virus. The locations of these health checkups are always kept confidential, fearing the privacy of the positive people and also the stigma that surrounds it. तो फिर ये एक्सटेंडेड आउटरीच मोड में हम लोग HIV टेस्टिंग, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड TB स्क्रीनिंग का हो रहा है. एंड देन टारगेटेड मेन पॉपुलेशन हम लोग उन लोग को कर रहे हैं जो लोग बहुत हाई रिस्क ग्रुप्स में इन्वॉल्व है. फॉर एग्जांपल जो सेक्सुअल वर्कर्स लोग हैं, फीमेल सेक्स वर्कर्स, एंड देन मेल हैविंग सेक्स विद मेल जिसको हम लोग MSM बोलता है, एंड देन IDUs और PWIDs जिसको हम लोग people who inject drugs or injecting drug users, as well as migrants जो एक जगह से दूसरा जगह में वो लोग काम का दौर लेबर ये सब में हम लोग वो करता है, उन लोग को हम लोग टारगेट कर रहे हैं. दोस्त हुआ पॉजिटिव HIV पॉजिटिव है उन लोग को हम लोग अच्छा से काउंसलिंग दे के MICTC में काउंसलिंग होता है, एज वेल एज टू ART सेंटर जो ट्रिम्स में है उधर में हम लोग का काउंसलिंग होकर उन लोग का दवाई भी इनिशिएट करता है. The data by the State AIDS Control Society also states that the most affected group of people belongs to the age group from 20 to 29 years.
followed by the people who belongs to the age group from 30 to 44 years of age. We got in touch with an individual who contracted the virus while he was still in his 20s and has been living with AIDS since then. He says his journey after contracting the virus has not always been smooth. शायद जवानी में थोड़ा बहुत घुमा फिरा, तो ऐसा में कहीं में इनकाउंटर अनप्रोटेक्टेड सेक्स से भी शायद वही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसका कारण जो है 4 होता है। तो हम तो ड्रग्स वगैरह में तो है ही नहीं, तो इसमें अपना खुद को इतना नॉलेज नहीं था ये HIV कैसा फैलता है, कैसा में वो लोग कंटेक्ट करने से होता है। तो कहीं ना कहीं ये अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही ये वायरस जो है मेरा अंदर में आ गया। पहले का जो माहौल है वो अभी याद करने से कभी कभार आंसू भी आ जाता है। आदमी को यूं ही इंसल्ट करना, यूं ही आदमी को हिसाब नहीं करना और कहानी इजी से बताना, पहले और अभी का बहुत डिफरेंस है मेरा। पहले ऐसा रास्ता मेरा पास, कमाने का रास्ता मेरा पास बहुत ही था। उसके बावजूद भी अपना दोस्त लोग को जाने वाला को देख के हम लोग का इंसान है, हम लोग का दिल भी बहुत डाउन होता है। तो मेरा पास बहुत स्किल है कमाने का, जैसा यहाँ में तो जो भी खुचुर मुचुर जो मिलता है वो तो डेफिनेटली वो तो सब आदमी वेलकम करेगा। लेकिन अपना जो स्किल है, स्किल होने के बावजूद भी आप उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जैसा अभी हम पहले इसलिए नहीं अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मेरा वजह से किसी और का फैमिली में प्रॉब्लम ना हो। और जैसा भी पहले एक बार गाड़ी घोड़ा चलाता था, तो गाड़ी घोड़ा चलाते में एक दो बंदा है वो हमको अटैक किया। तुम इतना बड़ा बीमार को लेके छुपा के हम लोग के साथ क्यों इन्वॉल्व करके बैठा है। हमको वहाँ में बहुत अटैक किया, अभी भी कहीं में दागी है, बहुत 2 आदमी ने हमको मारा है, नाम तो मेंशन नहीं करेगा। तो उसको लेके हम बहुत होशियारी रहेंगे कि अगर कमाने का रास्ता तो मेरा पास बहुत है, तो अगर उसके जैसा ही अगर प्रॉब्लम क्रिएट होने से पता चला कि जो 2 लड़का है वो उसके ऊपर में नॉलेज नहीं था, तो अननेसेसरी इसलिए पैर हाथ को यूज़ किया है, तो दोबारा गलती नहीं करेगा। तो ये सुन के हम उसको जो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दिया था उसको हम खुद विड्रॉ किया। कहते हैं आप लोगों की कम्युनिटी को, तो आप लोगों को कैसा ये बिहेवियर से आप लोगों को कैसा इफेक्ट होता है? देखिए, डेफिनेटली हम लोग को अगर खराब नज़र से हम लोग को देखेगा तो 100% हम नहीं चाहता है कि हमारा स्टेट में इस तरह का हमारा जैसा दोबारा जन्म और आए। हम लोग ऊपर वाला का शायद कहीं ना कहीं गलती से इस तरह का हम लोग वायरस हम लोग का बदन में घुस गया, तो हम लोग नहीं चाहता कि और मेरा जैसा और रहे। अगर आप लोग भेदभाव हम लोग को खराब नज़र से देखेगा तो बहुत सा जगह है जो आजकल जो माहौल है बहुत ख़राब है, जो कहीं में गलती से या जाने अनजाने में हमारा जैसा आदमी जो है कहीं होटल में जाएगा
कहीं अपना दोस्त बना के रोल बनाएगा तो वो भी एक खतरा का ही रास्ता है। हम लोग का जो स्ट्रेन है, जो सब आपस में हम लोग कभी कभार जब एक दूसरे का हेल्थ अच्छा होने से ऐसा देखता है कि कुछ हम लोग का बैठे बैठे तो हम लोग नहीं कर सके, कुछ एक दूसरे को ऐसा माहौल लाना है कि भले हम आप मर जाएगा लेकिन हम लोग का जो कम्युनिटी का माहौल में ऐसा रिमार्क लाना नहीं चाहे। The government provides free medication, treatment, counseling, and other benefits, which includes several schemes for the people who tested positive of AIDS. But according to the AIDS Control Society, very few people show up to avail these benefits due to the stigma that still surrounds the disease. No, actually, stigma earlier, initial stage, it was the extreme stigma or discrimination was there. After COVID pandemic, it seems that stigma is not that, because people understand now that people usually do not die of AIDS, which is lighter than like hypertension, diabetes, and people die of HIV, hepatitis then more than the HIV/AIDS. HIV/AIDS is normal now. You can say it's a clean disease. Only life you cannot take away from the human blood, but it lifelong. But it doesn't cause much harm, subject to the continual dosing of the medicine. Subject to the continuous taking dosing of the medicine. That is the thing. इसलिए हम वही बोलेगा, सब तो एक बार ही जन्म होता है, जाने अनजाने में हम लोग इस कैसा, हम लोग को भी पता नहीं है कि वायरस कब घुस गया, कैसा घुस गया। तो आपका प्यार, आपका जो सपोर्ट है, हमारा जैसा आदमी को आप प्यार करेगा तो हम लोग बहुत जिएगा, और आप लोग हम लोग को खराब नज़र से देखेगा तो वायरस जो है हम लोग को जल्दी ही खा देगा। As Dr. Borang has pointed out, the taboo surrounding HIV/AIDS is much lesser if we compare to past years. And we are actually seeing winds of change here. But coming out as a positive person is still a very big and a drastic step for most of the positive people. They fear what will be the consequences be after they come out as a positive person. The government provides various facilities to the AIDS positive people. They provide free medication, free counseling. Various schemes are designed for the AIDS positive people. But very few people come out to avail these services, fearing the stigma that surrounds the disease, although their identification is kept confidential by the society. And the society also has to put an extra effort to reach out to these people to give them free health checkups. One fact remains crystal clear, that the number of AIDS positive cases have increased drastically in the state. As I've mentioned before, if we look at the data, if we compare the data to last year's data, the number of AIDS positive cases has actually doubled. If we gather the entire facts, figures, and the information that we have gathered, one question pops up for the people of Arunachal Pradesh. How will the state tackle the increasing cases of HIV/AIDS positive cases if HIV/AIDS itself is seen with so much stigma?